नुआ जगह को गले से आपणकर जॉब्र ट्रांसफर नहीं कि हो हायर स्टडीज की हो जत आम नुआ जगह को जाऊँ आमर पड़ोसा लोक किसी हेल्प दरकार अच्छी बट आम से फंबल करुँ राइट वर्ड कौन हम केमी मु हेल्पटा को मागी पारि ताकि हेल्पटा मत मिल सेटा को जानापी वीडियो टू एंड पर्यंत निश्चय देखु यूजुअली पीपल हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प टू द नेबर्स बिकॉज दे डू नॉट नो द राइट वर्ड्स. Well, one evening I needed a help from my neighbors. On that day, actually my mixer stopped working and few guests were about to come. देखु ना घर को गेस्ट आसबार अच्छे मोर ग्राइंडरटा काम करूनी तो मु कमिटमेंट तो देइछि ना लोक माने आसबे तो तांको किछि तो ऑफर करिया को पड़िबो तो मु इमिडिएटली तो ग्राइंडरटा को ऑर्डर करि परिबिनी या इमिडिएटली बिना ग्राइंडिंग रे रोसई तो करि भी हबनी आज का डेट रे तो मते नबा को ही पड़िबो हेल्प मोर नेबर्स टू बट मु नुआ जाइछि तांको जानिनी कोन करिबी केमती कहिबी सो आई गैदर्ड ऑल माय करेज. I went out and knocked the door of my neighbor. The moment one lady opened the door, I said, "Hello, could you please help me out with your mixer for a few minutes?" I said, "Hello, I'm really sorry to disturb you at this odd hour, but could you please help me out with your mixer for a few minutes?" The lady replied, "Of course, please take it." I replied, "Thank you, and I really appreciate your timely help." एबे इमेजिन करंतु जदि मु कहि थांती गिव मी योर मिक्सर जदि मु गिव मी योर मिक्सर कहबी ना इट साउंड्स वेरी डिमांडिंग तो व्हेन वी डिमांड नो वी डोंट गेट बट व्हेन वी अप्रोच इन अ वेरी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल वे वी गेट द थिंग बिकॉज बाय दैट वे people feel respected. When somebody feel respected the person becomes automatically ready to help you. See, when you say give me your mixture, here your intent is not to undermine the person, but the way you are approaching that sounds as if you are undermining the person. So learn the right way, learn to approach in a right way to get help from people at right time. That day I realized kind words build relationship. Tag a friend who feels shy to request, to approach, to take advice, and don't forget to like, share, subscribe the channel. Thanks for watching. Namaskar.